अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज खुराखेल गांव में एक बड़ी तकरीब मुनक़्क़द हुई जी। मोहम्मद खताब ख़ान आई केयर हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा गया जी। ये जो तकरीब है, कैनेडियन एम्बेसडर यहाँ आई हुई हैं जी, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है। आगे चलकर आपको दिखाते हैं, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। ये उन्होंने इफ्तिताह किया है जी इस हॉस्पिटल का, दुआ मांगी जा रही है। इससे परवेज़ ख़ान ने भी ख़ताब किया, अकील ख़ान ने भी ख़ताब किया है, DPO साहब ने ख़ताब किया है, डिस साहब ने ख़ताब किया है, यावर बुखारी साहब ने ख़ताब किया है, काजी अहमद अकबर साहब ने ख़ताब किया है और आखिर में एम्बेसडर साहबा ने भी ख़ताब किया है। इसकी तफसील आपको सुनाते हैं। इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। Allah surely knows it all. This eye care institution will be a great benefit to the people of Khattab and many others. I met with the Governor of Punjab and I also invited him, who is the backbone of this charity. Without him, we wouldn't be here today, and it's all credit goes to him. So I want to have a big clap for Akil Khan in your future. And we did it. We didn't look it back and my brother from the tree. That's a wrong concept. So we work day and night over there, and Allah blessed us with lot. You know, he's all the time, you know, he's not going to school and they are busy in other activities, which is the ambulance project was one of the big things, because a lot of women, a lot of older people, by the time they get to the hospital and then, you know, it's too late for them. Now the ambulance is here 24 hours, you just call and you have a service on their door. Our trust is not not old enough. It's just 6-7 years ago we made this trust here, and mashallah, within few hours with the supervision of my brother, I'm here as a helper. Whenever he tells me come, and you know, when he asks me something, I'm there for him. But he is regularly come to this village, and he does a lot of work here. And I just want everybody understand that, you know, we don't take any donation from anyone. Whatever Allah gave us, we take our portion and give it to this project, and we just need your lot of du'as from that. And before I start other people, I just want to motivate young people, young girls, young boys, stand up and take the leadership. We did our part, you know, and now it's your turn, you know, especially the youngsters around me. And I think we should clap for the volunteers. They were outside working on a very hard sun. Please give a hot clapping for them. हमें अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। जैसा कि आपको पता है कि हम कोई चंदा, कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं लेते, और हम कोशिश करते हैं कि जो हमसे हो सके वो करें। मेरे बड़े भाई अकील खान, आपको सब पता है कि उनकी 6-7 साल की मेहनत के अंदर इस ट्रस्ट ने बहुत तरक्की की है। इनका एम्बुलेंस प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हिट हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने जो गार्बेज कलेक्शन शुरू की है, जो इंस्टॉल किए हैं गार्बेज कलेक्टर्स, दैट्स अमेजिंग वर्क। दैट्स एक्चुअली अ मॉडल फॉर द अदर विलेजेस, बिकॉज इफ यू वॉक इन, जब आप आते हैं इन गलियों में तो आपको कचरा नजर नहीं आता। उसके अलावा हमने ड्रेनेज का जो एक काम था वो भी माशाल्लाह इनकी सुपरविजन में हुआ है, और अब एक बहुत बड़ा ख्वाब ताबीर के लिए जा रहा है। मैंने यहाँ से बहुत लोग देखे हैं जिनको मोतिया का प्रॉब्लम है, वो बेचारे ऑपरेशंस ना होने की वजह से या कम वसाइल की वजह से उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती या प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलती, जिसकी वजह से बाज़ लोग अंधे भी हो जाते हैं। तो भाई का ये बहुत अच्छा एक विजन है, ख्वाब था कि हम इसको पूरा करने जाएं, और ये आपके सामने एक फैसिलिटी आ रही है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम इसको लेके चलेंगे, आपके सामने कंप्लीट करेंगे और फिर आपके हवाले कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ रहना नहीं है, आपने संभालना है, यह आपकी चीज़ होगी। एक चीज़ हमें आपसे ज़रूरत है और वो आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यहाँ के जो बच्चे और बच्चियाँ हैं, मेरी एक्चुअली मौलाना साहब से भी, हमारे इमाम साहब से बात हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप मस्जिद में स्पीच लेकर आएँ। जो जुम्मे का दिन खुतबा होता है वो इस्लाम में उसका एक विज़न है कि हम यूनाइट होकर कोई बात करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ हमारी मस्जिद में खुतबे बहुत कम होते हैं, स्कॉलर्स वंस अ वाइल आते हैं। इसकी बहुत ज़रूरी है कि हमने अपनी यूथ को एजुकेट करना है, हमने अपनी बेटियों को पढ़ाना है। एक पढ़ी लिखी माँ एक पढ़ा लिखा माशरा बनाएगी। आज अगर आपका बच्चा जो है वो ट्रैक पे नहीं है तो उसमें माँ का बहुत बड़ा रोल है कि उस माँ के पास एजुकेशन नहीं है। तो मेरी आपसे सबसे ये दरख्वास्त है कि कनाडा की गवर्नमेंट वो वेलकम करती है, वीज़ाज़ आर ओपन,
आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आएँ, एजुकेशन करें, वहाँ आप अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू कर सकते हैं या वापस आके इस गांव को सर्व करें। लेकिन मेरी स्पेशली नौजवानों से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप लोगों को आगे बढ़ना है, लीडरशिप रहनी है। एजुकेशन है तो सब कुछ है। एजुकेशन पैसे के लिए नहीं की जाती, एजुकेशन आपकी पर्सनैलिटी क्रिएट करती है और अपने कुरान से आपने स्टिक रहना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन मॉडल है। ऐसा इंसान आज तक तारीख़ में आया ही नहीं है। उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, अपने कुरान के साथ स्टिक हो जाएं, उस रात के कोई एक पहर निकाल के अपने रब से बात करें तो आपको एक कम्युनिकेशन फ़ील होगी। जब वो आपसे राज़ी हो जाएगा, दुनिया की एजुकेशन आपको मिल जाएगी, तो देयर इज़ नो वे कि आपको कोई सक्सेस से रोक सकता है। ना तो आपका परवेज़ कुछ बना के दे सकता है, ना अकील। आपको अपनी एफ़र्ट्स, आपकी इंटेंशंस, आपके एक्शन इंशाल्लाह सक्सेसफुल करेंगे। अब मैं अपने बड़े भाई और द बैकबोन ऑफ दिस प्रोग्राम अकील खान से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और कुछ प्लीज़। I don't have much to say. He basically said everything. I will make long story short because a lot of people and there's a corona social distance there too, so we don't want anybody to get sick here. We're going to make it short. Basically, I start this program. Let me do it, and I'm sorry about the language, ma'am. I will do it because a lot of people sitting here they speak Urdu and our Hinko, so I will switch it to that. तो ऐसा ही प्रोग्राम इंशाल्लाह शुरू किया है। काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 साल ते काफ़ी चीज़ा से सक्सेसफुल हों। एम्बुलेंस भी माशाल्लाह से नहीं चलनी पईयान। असा गार्बेज कलैक्टर ने जड़ा काम किया है, ना रक्शे चलने पाए और असला जड़ा मेन जो ड्रीम है वो भी इंशाल्लाह असना पूरा होना पाया। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहना हूँ, काफ़ी लोगों ने दिमाग थोड़ी थोड़ी गलन कैसे हो सकना असना कोई फ्यूचर सियासत की तरफ कोई रुझान हो। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर जस्ट सोशल पीपल एंड अस सिर्फ जड़ा अपने वालिद ने जड़ा ना साले सवाब असी सब कुछ करने पाई। तो इस असानी कोई सियासी टेंशन नहीं है और सिर्फ कोई सियासी असा ने जड़े 2 साल साढ़े बैठे पे असा रिस्पेक्ट दी ताइन आइन सारे। और इसके अलावा मेरी जी कोशिश है आगे फ्यूचर मज़ीद अगर असा कोई होर की इस ग्रांच कोई मज़ीद कोई प्रोग्राम हो सका तो इंशाल्लाह से कर सकें। और स्पेशली थैंक्स जड़ा है मैं जड़ा से वॉलंटियर वर्क होते पर उन्हें मैं देना चाहना हूँ। नाम सारे याद नहीं क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द पीपल आई जस्ट मेट देम, सो आई डोंट रिमेंबर एवरीवन। माय स्पेशल थैंक यू टू हाई कमिश्नर गैलमर वेंडी गैलमर, असाने जड़े सैयद यावर बुखारी साहब और असाने और जड़े काजी साहब बैठे पने दर सारे ने नाम याद नहीं हो, लेकिन मैं DCO हामिद इमरान शेख उन्होंने से थैंकफुल। DPO राना शोहेब वी थैंकफुल टू यू। काजी अहमद अकबर वी आर वेरी थैंक यू टू। और सब तो इम्पोर्टेंट सारे गिराए ना शुक्रिया। Well, ma'am, first of all, it's a matter of immense pleasure for me to welcome you in my district. But I'm extremely pleased that you have come here for groundbreaking of a very important, I must say, a great project regarding eye care in a far-flung district. So I hope that this, I must say, the bond which is now being established between this village and the Canadian and the people of Canada will go strong and even will grow stronger and stronger. Likewise, I'm also thankful to the Minister of Social Welfare because he always takes keen interest in all such public welfare activities and public welfare projects, and I have found him a very forthcoming minister, and he always pushes us, the administration, to do the good thing, to do the development work and all the ancillary activities. I will especially appreciate Mr. Pervez Khan and Mr. Akil Khan what they are doing for their area, and I must say that they are the inspiration for the local people to replicate this model in other parts of the village, because government has resource constraint, government has less resources, so the entrepreneurs have to come in, have to chip in to fill that gap, so that we, the government and the people, work together for the common welfare of the public. Last year I was in the USA. I was availing the Humphrey Fulbright scholarship, and I visited Canada as well. I was studying actually first in the Syracuse University and then in the Harvard, and I visited Ontario and the adjoining areas of the Canada. Canada is a great country. Canada, I must say that Canada is emerging as a role model in the social welfare regime in the whole world. So now I would like to say some words in Urdu. मैं ये समझता हूँ कि इस गांव की ये खुशकिस्मती है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, लेकिन जैसे भी बात हुई है कि इसको बना तो दिया जाएगा,
असल चीज़ इसको चलाना है, इसकी ओनरशिप है। और इसकी ओनरशिप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं कहता हूँ कि आप सब लोगों ने इसकी ओनरशिप लेनी है और इसको कामयाब नहीं कामयाब तरीन बनाना है इंशाल्लाह ताला। ऑनरेबल High Commissioner, I on the behalf of District Administration extend my 100% support. We'll be at the back end call of this project and we sincerely hope that it will be completed without any hiccups. Thank you very much. हमारे दरमियान हमारे DPO साहब मौजूद हैं, राना शुएब साहब। प्लीज़ राना साहब आएँ और कुछ लफ्ज़ कहें इस प्रोजेक्ट के बारे में। Her Excellency, the Canadian High Commissioner, the Honourable Minister, Mr. Yawar Bukhari, members from the administration, respected guests, Assalamu alaikum. I'm really pleased to be here today to be a part of this ceremony, and it's very encouraging to see philanthropists, private individuals contributing to the uplift of an area and helping set up a hospital which is going to go a long way in providing better healthcare facilities in the area. I'm very happy to meet Mr. Parvez, Mr. Akil, and I would like to take this opportunity to appreciate you and the way you've engaged the community, whether they're in the form of volunteers and who helped you set up this ceremony, and who are also going to play an important part in the setting up of this project, in the construction of the building, and later on in the operation of this hospital. So having that bond with the community, even after going abroad, living abroad, having that bond with the community and then coming back and giving something back to that community from which you belong, that's very good and very encouraging. And I wish that more and more people will come forward and set up more hospitals, more educational institutions in their country. So that is going to do us a lot of good. As the Honourable Deputy Commissioner already stated, the government has limited resources, but the community, they can come forward and they can pool their resources and do things which the government probably cannot do. So once again, I would like to thank you for inviting me to be a part of this ceremony, and I would also like to assure you that whatever help or support that you require as the project goes forward, that will be available to you. So from my behalf, I assure you of all support, and once again, thank you very much. Now I would like to say a few words in Urdu for all the other participants sitting here. आप सबके बीच में आज इधर आके आपके इसका गांव का विज़िट करके आज मुझे बहुत खुशी है। जिस किस्म का मैं ये देख रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट है, जिस किस्म का हस्पताल है, ये इधर अगर बन गया तो यहाँ पे जो आपको तिब्बी सहूलियात हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएंगी इस एरिया के अंदर। जिस तरह से अभी जो ये प्रोजेक्ट के वो है बानी हैं, उन्होंने जिक्र किया कि हमें इन्हें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी सपोर्ट इस सेंस में चाहिए कि जिस तरह से अभी आपके वॉलंटियर्स हैं, अभी जिस तरह से आप लोग इनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह से अगर वो जारी रही सपोर्ट तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो जाएगा। मैं अपने बिहाफ पे ये ज़रूर बताता हूँ, जिस तरह से डीसी साहब ने भी कहा, इंतज़ामिया की तरफ से जो सपोर्ट है वो हम लोग ज़रूर देंगे। बाकी लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट इस किस्म का जो जब तक कि उधर की लोकल कम्युनिटी की सपोर्ट ना हो वो नहीं कायम हो सकता। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि जिस तरह से अभी आप लोगों ने इनको वेलकम किया है, जिस तरह से अभी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, इसी तरह से इसको आगे लेके चलें तो इंशाअल्लाह ये बहुत एक मिसाली किस्म का यहाँ पे अस्पताल बनेगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद और लोग भी इंकरेज होंगे या और लोग भी आएंगे और यहाँ पे आके इस किस्म के प्रोजेक्ट्स करने की उनमें वो हौसला अफजाई होगी। सो मेरी तरफ से आप तमाम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Village, this will not only bring into limelight this village itself but the whole area. So madam, I thank you very much for that. और मैं इत्थे आखना चाहना कि परवेज़ खान और अकील खान जिहड़ा काम कीता है इस हवाले नाल सच बड़ा खुश नसीब है। एक बहुत वड्डी तादाद सच यानी इस मुल्क तो बाहर बैठी पई है। करूँगा, I'll speak first in Urdu and then I'll come back to you, madam. ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਬਚੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ दूर वतन तो वो वापस आके इस किस्म ना काम करो। हालांकि असा कोल अपने इतने बहुत लोग जेडे कर सकने, लेकिन तुसा एक इंस्पिरेशन चाहिए, एक बंदा चाहिए कि जेड़ा वो एक जैसा उम्मीद की किरण होनी है ना उसा बाले उसा जिंदा करे ताकि असी लोग सारे
ਉਸੇ ਨਾਲ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਵੀ ਜਾਓ। हिस्ट्री ये है कि जो सोशल वेलफेयर दी है कि ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ एक डॉलर तो वास्ते कुछ नहीं, लेकिन इतने एक बंदे कम से कम एक वक्त की रोटी मिल सकनी है। तो ये चीन भी जितना अज इतना बड़ा बन गया, ये चीन सिर्फ अपने बलबूते तो नहीं बना, ये परवेज जे अकील जे असने भरा जेड़े चीनी है और मुल्क को बाहर है, उन्हें सब तो पहले पैसा वापस आंदा। और चीन की तरक्की में सब तो पहली जी किरण आई वो अपने उन्होंने चीनी है जो अज असी परवेज और अकील में वेखने पे और ये जे होर भरावां च असी वेखने पे। इस्लाम जी कुछ सिखाना वही सिखाना, ए खिदमत करो लोगों की, अपने भैन भरावां की। ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग par excellence. He is someone like the Prime Minister of New Zealand, and we get inspired by what he says, what he stands up for. And this is something which shows that he's a human being before being a Canadian, before being a Christian, before being anything else. The first thing is, and our Prophet has taught us, that we are all brothers and sisters. Either we are brothers as sons and daughters of Adam and Eve, or brothers and sisters in faith. And as Muslims, if we do not have an absolute belief on the Bible, we are not Muslims. We are not true Muslims that way. And we have to believe in all the holy scriptures like the Torah, the Bible and Quran, which is the finality, which we say is the message of all messages. And we are honored that you have been our guest here today, and you took all the problems that you faced for arranging your visit. And I know how diplomatic issues arise when a diplomat is driving out of Islamabad and to a far-flung area. This is one of the most underdeveloped districts in Punjab, and we at times feel very sorry for ourselves, but feeling sorry is a defeatist attitude. So what we have done as our district president Qazi Ahmed over here, we have taken on this as a challenge now, and we are showing to the rest of the province that we are capable and we are the doers here. We are the first responders from moving from a backward district to, inshallah, God willing, to a developed district. And with your international perspective and your guidance, we hope that in our social welfare ministry as well, we'll be able to work together. And like the out-of-box plans that we are bringing out, I'm sure you'll be pleased having decided at one time to settle in Canada, and then the love of the country pulls you back. And I'm sorry for that, but my love for Pakistan was more than my love for Canada at the time. And I really do appreciate that you took your time. You had to go through all the problems of getting all the clearances to be here. It is truly an honor, and it is something that brings our two countries together. Being a representative of one of the greatest prime ministers that I've seen in my life, it honestly is an honor, and this area welcomes you. The sons of the soil welcome you. The people who are very conservative here, they welcome you. It shows that what the media says in the international world, are people having long beards or short beards, being there is no such thing as an extremist in Islam. We are all moderate. It's just a typical faction that does that, and we don't consider them as one of our own. We appreciate you being here as a woman, and you have showed the women in this area that women can do a lot, and this is truly a huge step towards women empowerment as well. And the realization of this area that a woman can be a chief guest, and a woman can sit, laugh and talk to the other male colleagues around her, and be able to guide them and learn from what this area, our traditions and our norms and our culture is. And we'll be more than happy. We would like to also say that be one of us, be the daughter of this area, be our representative in the community of bureaucrats, and your words do carry a lot of weight, and that's all because of your leader, the Prime Minister. Mr. Trudeau is a truly amazing Prime Minister. You people are lucky, and we are lucky that we have a Prime Minister who the world acknowledges as a very upright man, and a man whose mind only works towards uplifting the human resource in the country and the social activities.
we are proud of him being our Prime Minister, and we are really, really pleased that you were here as a representative of the Canadian Prime Minister and the people of Canada, and we welcome you anytime. And I would like you said you'll be back after a year. Ma'am, that's too late. These people are doers here. We would like to see you back in 6 months' time. And inshallah, God willing, you will see what these people can do, the sons of Church can do, inshallah. Thank you very much. अभी मैं अपनी फाइनल हमारी जो चीफ गेस्ट हैं उनको मैं इनवाइट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने इर्द गिर्द देखें कि यहाँ आपको कोई औरत, कोई ख़वातीन, कोई रिप्रेजेंटेशन नज़र नहीं आ रही। तो जब मैं इनसे मिला और मैंने इनसे कहा कि वहाँ कोई औरत नहीं होगी, आपको अकेले बैठना पड़ेगा, तो इस औरत ने उस पर यस कहा। तो दिस इज़ मतलब ये बहुत बड़ी और एज़ाज़ की बात है हमारे विलेज के लोगों के लिए। तो मैं आप सब से कहूँगा कि आपने खड़े होकर और ज़ोर की तालियां बजाकर इस औरत को अप्रिशिएट करना है जो कि तमाम मर्दों के दरमियान अकेली बैठी हुई है। विद द बिग क्लास प्लीज अवर चीफ गेस्ट वेंडी गिलमर, कैनेडियन हाई कमिश्नर। Welcome to the people of this village. I will speak a little bit in English and then my wonderful colleague Parham will translate for me into Urdu. I'm working on my Urdu, but it's not that good yet. But it really is my pleasure to be here today. I thank very much Minister Bukhari for the lovely speech, also for joining this important event, the District Commissioner for this region, the Chief of Police for this region, of course all of the local community representatives, and the wonderful brothers who have brought this project to you, the people of this village. We'll do it. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परहाम है और ये हमारे साथ इस वक्त कनाडा की सफ़ीर मौजूद हैं। मैं इनके लिए जो इन्होंने इंग्लिश में कहा, मैं आपके लिए उर्दू में इसका तर्जुमा करता हूँ। अव्वल तो इन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया सब लोगों का जो यहाँ पर मौजूद हैं और जिन्होंने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया, और उसके अलावा ये अपनी खुशी का इन्होंने इजहार किया कि ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ख़ास तौर पर यहाँ पर DC साहब मौजूद थे, DPO साहब, इंतज़ामिया जितना भी मकामी इंतज़ामिया है, और हमारे परवेज़ साहब और अकील साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। I consider myself incredibly lucky to be here in Pakistan as the representative of the Government of Canada. The bonds that tie Pakistan and Canada together are very strong, and no more evident than in a situation like this where we have our sons of Canada coming back to their homeland, to their ancestral homeland here in Pakistan, to help the people that are here. कमिश्नर अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं कि इनको बड़ी खुशी है इस बात की कि यहाँ पर मौजूद हैं, हुकूमत कनाडा की नुमाइंदगी की कर रही हैं यहाँ पर, और इससे भी ज़्यादा ये इसलिए खुश हैं कि यहाँ पर दो कैनेडियन भाई जो हैं जो वो वापस अपने इलाके में आए हैं और वो इस इतनी कार खैर अंजाम दे रहे हैं। Canada and Pakistan have been working closely together in improving basic health care for women and girls, for men and boys, so that the people, the young people of Pakistan are able to grow up and fulfill their full potential. Initiatives like this are so very helpful, and it's so encouraging that it's coming from the private sector, from private citizens who are giving back to help the people in their areas. The most important thing in all of these efforts is not necessarily to wait for governments to do things for you, but to do them yourselves. And so the example set by Pervez, by his brother, by the Khan family, is one that we should all be following. कमिश्नर ने फरमाया कि कनाडा का जो हुकूमत कनाडा का रुझान है वो बहुत ज़्यादा सेहत के ऊपर और तिब्बी इमदाद और सहूलियात के ऊपर है। इसी तरह यहाँ पर जो अभी इस प्रोग्राम का शुरुआत की गई है वो ख़ास तौर पर फिर उन्होंने फरमाया कि जो ज़रूरी नहीं है कि एक हुकूमत की तरफ से ही इसकी हेल्प की जाए या कुछ रिसोर्सेज हो, लेकिन जो मकामी लोग होते हैं उनका इसमें बड़ा किरदार होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ अकील साहब और परवेज़ साहब यहाँ पर जो इन्होंने इस काम को शुरुआत की है, तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त होगा। This is my first visit to this part of Punjab, to the Attic area. It will not be my last. I was saying I will come back when the building is constructed. I will come back to celebrate the work that has been done to bring it up and the community to support it. The support from all of you from this community for this facility is also what will make it successful.
कमिश्नर फरमा रही हैं कि ये इनका अटक का और इस पंजाब के इस इलाके का पहला विज़िट है, लेकिन यकीनन ये आखिरी विज़िट नहीं होगा। तो इंशाल्लाह जब ये बिल्डिंग बन जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, तो उस वक्त ये फिर तशरीफ़ लाएंगी। और ये है कि ये इसमें इसको बनाने में आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं और इस इलाके के लोगों की जो है ना वो इनपुट होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। I was also very struck coming into the village, frankly, by how clean it was, by the fact that there are garbage cans that are being used. For some of you who may see some of the work that I and my diplomatic colleagues are doing in Islamabad, you know that we are concerned sometimes by the amount of solid waste, of trash that we see in Pakistan. So your village is leading the way. Your example can be learned by others to help make Pakistan a green and clean community. कमिश्नर फरमा रही हैं कि इन्होंने जो एक चीज़ बड़ी नोटिस की यहाँ पर इस इलाके में, कोरखेल एरिया में, इस गांव में दाखिल होते हुए, वो ये दाएं बाएं देख रही थी कि जो गलियाँ हैं और जो सड़कें हैं वो बड़ी साफ़ सुथरी हैं, तो कचरों का ढेर नहीं पड़ा हुआ जैसे कि बहुत जगहों पे पड़ा होता है। तो उसके लिए ये बड़ी खुश हैं इस बात से और कहती हैं कि हम जो इस्लामाबाद में डिप्लोमेट से हम हर वक्त इस पर बड़ा ज़ोर देते हैं कि शहर की सफाई होनी चाहिए, कचरों का ढेर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ये आप सब के लिए को बहुत क्या कहते हैं सराहती हैं कि आप लोगों ने अपना इलाका खुश इसको साफ़ रखा हुआ और आप एक मिसाल बन रहे हैं और एक मिसाल कायम कर रहे हैं बाकी गाँवों के लिए, बाकी शहरों के लिए। And the last word I will say for you today, I am so honored that you have all come to celebrate this project, to welcome all of us who are visitors to your village. I'm looking forward next to going and meeting the women and the girls of this village. I know that it is your culture that these events happen separately, but I encourage all of you to look to your women for their input into managing your local surroundings, to keeping things healthy and clean, to supporting your families. Both men and women have a very important role to play. I am a champion, I am the product of education, that I am able to come and to represent my country to yours. I know that many of your girls that are also growing up would love the opportunity to represent Pakistan abroad. I look forward to welcoming them to do so. So my last word, thank you all very much for being here, for supporting this project, for welcoming Canada in all of its guises into your village, and I look forward to coming back again. और कमिश्नर जाते हुए सिर्फ आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहती हैं और ये कहना चाहती हैं कि इसके बाद वो यहाँ के आपके इलाके की बच्चियाँ और कुछ ख़वातीन हैं उनसे मिलना चाहेंगी, उनसे मिलेंगी जैसा कि प्रोग्राम में उनको बताया गया है। और फिर इन्होंने ये बताया कि हर इलाके में, हर सोसाइटी में ख़वातीन और मर्द, लड़के लड़कियों दोनों का बराबर रोल होता है। तो ये इंशाल्लाह इसी तरह से साथ मिलजुल कर हम इस सोसाइटी को, इस कल्चर को इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस तरह ये तकरीब इख्तिताम पज़ीर हुई। परवेज़ ख़ान और अकील ख़ान ने तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर इस तकरीब में शिरकत की। नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में इस तकरीब के मुतल्लिक़ राय दे सकते हैं। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ के साथ खैर से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।